Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting poem, Class 8 English, A Space Odyssey. Now what is Odyssey? Now as you all know, space means the outer world above the earth atmosphere, and Odyssey, it is a long and adventurous journey, an exciting journey which a person takes. So now here the journey we are talking about is a space journey. Now जो ये poem है, it's a very very imaginary poem. An imaginary poem from the point of view of a child. A child who is busy studying for the exams and then suddenly he has a daydream. Means he starts daydreaming. वो सपने देखने लगता है दिन में ही पढ़ते पढ़ते he starts daydreaming. और वो क्या daydreaming करता है, that is all which has been described in this poem. A very very interesting poem. The poem is from the point of view of a child who is creatively, he tries to change the scenario so that it suits his fantasy. Okay, so now I'm just starting out the poem and then I'll just explain to you paragraph wise. We have got 11 paragraphs in this poem, so I will explain you as per the paragraphs. And this is written by Velsa George, and she has just written this poem using different imageries, the views about the space and the aliens also in the different light. And I hope everybody knows who are aliens. Aliens, they are the what you call the people who are residing on the different other planets except the earth. Okay, so now let us start this very very exciting and very sweet poem. Outside the night was gathering strength. How swift our lightning Sputnik, outrunning the speed of sound and light, shot into space with a whirling jerk. At a distance were luminous spheres suspended like glowing lanterns. Comets and meteors in hyperspace seemed more like diffused patterns. An asteroid came whizzing towards us. I closed my eyes in dreadful shock, fearing a terrible head-on collision. Thank God, it deviated from our track. I looked at my friend seated beside. Obvious, not here. So lost in thought, looking down, I saw Mother Earth, a luminous ball not bigger than a sapphire dot. Now, so what happens when the child, he was just busy sitting reading for the exam next day, he started daydreaming. और जब वो daydream करता है तो उसको क्या क्या नज़र आता है कि उसको लगता है कि बाहर बहुत अंधेरी रात है और वहाँ पर जो उसका एक स्पेसशिप है, उसने अपने स्पेसशिप का नेम दे दिया है स्पुतनिक. ओके, और एक्चुअली में क्या था जो स्पुतनिक था, इट वॉज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच वॉज लॉन्च्ड बाय सोवियत रशिया. तो उसने इमेजिन कर लिया कि जो मेरे स्पेसशिप का नेम है दैट इज ऑल्सो स्पुतनिक. ओके, तो जो उसका वो स्पेसशिप था स्पुतनिक, इट इज रनिंग outrunning the speed of sound and light. Means his spaceship, he is flying, he's shooting out faster than the speed of sound and light. And then from the distance, as the night it grows darker and as his spaceship moves down, what happens? He sees different heavenly bodies. Now heavenly bodies, I hope you all know comets, meteors. You must be knowing what are comets. Comets, it is just a body of ice and dust, and it has got tail also, which is made up of gas and dust. And then meteors जैसे आपने सुने होंगे shooting stars. Again meteors, they are a body from matter, and when they enter the earth's surface, and because of the friction they burn out and they give a streak of light, जिसको कि आप लोग shooting star या wishing stars भी बोलते हैं. And hyperspace means the outer space, heavenly bodies which are coming from the outer space. तो क्या होता है, उसको दूर से सब क्या दिखती हैं, जितनी भी वो heavenly bodies थी राउंड शेप में, as you can see in the pic. और ऐसा लग रहा था कि they were just like some suspended lanterns, जैसे कि लालटेन की जो रोशनी है उस तरह से वो चमक रहे थे. और जो वो स्पेस के अंदर ये सारे कॉमेट्स, मीटियोर्स और ये दिख रहे थे, उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब एक हेजी सी, नॉट क्लियर, डिफ्यूज पैटर्न, मतलब क्लियर नहीं थे, वो हेजी लुक के इसको नजर आ रहे थे. तभी उसको क्या नजर आता है सडनली कि एक एस्टेरॉइड. नाउ व्हाट इज एस्टेरॉइड? एस्टेरॉइड, इट इज अ स्मॉल रॉकी बॉडी which are orbiting around the sun, and most of them they are found between the Mars and the Jupiter. Okay, so he sees a very very big asteroid which was charging towards them.
एंड ही जस्ट क्लोजेस हिज आइज. उसको डर लगता है कि शायद ये हमारी जो स्पेसशिप है, स्पुतनिक है, उससे ये टकरा जाएगा. अ टेरिबल हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन मतलब फ्रंट एंड, फ्रंट ऑफ द एस्ट्रॉइड इट विल कोलाइड विद द फ्रंट ऑफ द स्पुतनिक, और इनकी जो स्पेसशिप है ये क्रैश हो जाएगी. तो वो अपनी आइज बंद कर लेता है डर के. लेकिन थैंक गॉड इट डेविएटेड फ्रॉम आवर ट्रैक. डेविएटेड मतलब वो रास्ते में से हट गया, इट मूव्ड एंड देयर स्पेसशिप वाज सेव्ड. और उसने अपने फ्रेंड की तरफ देखा, जो फ्रेंड उसके साथ में बैठा था. उसको ड्रीम में, अब नाउ यू कैन सी, वो ड्रीम में अपने साथ एक फ्रेंड को भी लेकर जा रहा है. तो वो अपने फ्रेंड की तरफ देखता है, लेकिन फ्रेंड वो तो अपनी थॉट्स में लॉस्ट था. वो अर्थ की तरफ देख रहा था. उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि एस्ट्रॉइड उन्हें टक्कर मारने वाला था या नहीं. और जो ऊपर से उन्हें, स्पेस से उन्हें जो अर्थ नज़र आ रहा था, मदर अर्थ नज़र आ रहा था, वो कैसा नज़र आ रहा था? लुमिनस बॉल. लुमिनस मीन्स एक इल्यूमिनेटेड बॉल, एक रोशनी वाली एक बॉल की तरह नज़र आ रही थी. बट इट वॉज जस्ट लुकिंग लाइक अ सफायर डॉट. सफायर इज ब्लूइश कलर, ब्लू जेमस्टोन होता है, और डॉट की तरह नज़र आ रहा था. यू कैन सी. एंड ब्लू कलर क्यों नज़र आ रहा था? एज यू ऑल नो, मोर देन 75% ऑफ द अर्थ सर्फेस इट इज कवर्ड विद वाटर. तो इसलिए दूर से वो ब्लू कलर की डॉट नज़र आ रही थी. सो इन दीज 4 पैराग्राफ्स कैन यू सी द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड. बच्चा डे ड्रीमिंग कर रहा है और वो इमेजिन करना शुरू कर दिया उसने, कैसे वो अपने स्पुतनिक में बैठकर स्पेस में जा रहा. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ्स. ओह, हाउ क्विकली वी लैंडेड ऑन मार्स. इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैड लर्न्ड. Neither a barren belt of sterile terrain nor a rugged stretch of craters burnt. Okay, तो अब ये लोग कहाँ लैंड कर रहे हैं? They are landing on Mars. So now see the imagination. ये सीधा अर्थ से मार्स तक पहुंच गए. और जब वो मार्स पर आते हैं तो ही सेज कि अरे, मार्स के बारे में तो हमने पढ़ा था कि वहाँ पर बैरन बेल्ट ऑफ स्टेराइल टेरेन है. बैरन मीन्स जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता, एम्प्टी है, अनप्रोडक्टिव है, और वहाँ पर जो लैंड है वो कुछ भी ग्रो नहीं करती है. पूरी लैंड इट इज़ ऑल बैरन. और ना ही वहाँ पर कुछ रॉक्स थी. रगड मीन्स रफ सरफेस होता है जहाँ रॉक्स होती है. और क्रेटर्स, एज यू ऑल नो, क्रेटर्स दे आर लार्ज होल्स. तो वो कहता है कि मुझे तो मार्स के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कि बैरन लैंड या ऐसे ग्राउंड जहाँ पर कुछ नहीं उग रहा है, और ना ही मुझे वहाँ रॉक्स नज़र आ रही हैं. बट अ हेवनली प्लेस सो कूल एंड सीरीन, full of scintillating scenes and ravishing sights. We, the emissaries from a faraway land, were warmly received by a team of alien sprites. So what he says ki we have read Mars is a very barren planet, nothing grows there, but मुझे तो वहाँ पर क्या मिला? मुझे तो मिला कि जो वो एक heavenly place था, स्वर्ग जैसा एक place था जो बहुत cool था, बहुत serene था, peaceful था. और वहाँ पर मुझे डैजलिंग साइट्स दिख रही थी. ब्राइट डैजलिंग साइट्स थी, डिलाइटफुल साइट्स थी. और जो हम लोग आए थे अर्थ से, एमिस्ट्रीज मीन्स ऐसे लोग, स्पेशल पीपल हु आर सेंट ऑन स्पेशल टास्क्स. तो मतलब हम जो अर्थ से मार्स पर आए थे, उन्हें तो यहाँ के जो मार्शियंस थे, मार्शियंस एज यू ऑल नो, द पीपल हु लिव ऑन मार्स दे आर कॉल्ड मार्शियंस. तो वो कहता है कि जो मार्शियंस है वो तो हमें बहुत वार्मली, बहुत प्यार से रिसीव कर रहे हैं. Team of alien sprites. Alien you understand, and sprite means elves or fairies. जो मार्शियंस है उनको वो फेरीज बोल रहा है कि वहाँ की ब्यूटीफुल फेरीज और एल्व्स वो हमें बहुत वार्मली रिसीव कर रहे हैं. The weight of the world suddenly lifted from us. We bounced up and down, almost floating in the air. Found ourselves in a gorgeous garden with springing fountains and blossoms fair. अब ये पूरा मार्स को एक्सप्लेन कर रहा है कैसा उसको फील हो रहा था, कैसा उसे वहाँ लग रहा था. तो द वेट ऑफ द वर्ल्ड सडनली लिफ्टेड फ्रॉम अस. नाउ एज यू ऑल नो कि जो ग्रेविटी है वो मार्स पर बहुत कम है. तो नेचुरली जो वहाँ की जो जब आप उस पर चलते हैं या मूव करते हैं तो बहुत लाइट फील करते हैं. तो उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया का जो भार है वो एकदम से हम पर से उठ गया है. एंड वी आर ऑल बाउंसिंग अप एंड डाउन, और फ्लोट कर रहे थे. और हमने फिर अपने आप को कहाँ पाया? इन अ वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन. और वहाँ पर क्या थे? वहाँ पर फाउंटेन्स चल रहे थे, और वहाँ पर फ्लावर्स थे, ब्यूटीफुल सीन्स थे. तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि जो ये गार्डन्स थे फुल ऑफ फ्लावर्स थे. देन ट्रीज वर लेडन विद डेजलिंग जेम्स, lagoons and lakes of liquid silver, vast expanse of tawny vistas, plains waving with luxuriant verdure. So now
अब आके वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसको मार्स पर क्या क्या चीजें मिली. नाउ लुक एट द इमेजिनेशन. सोचो कि एक बच्चा क्या क्या इमेजिन कर सकता है कि जो ट्रीज थे उन पर क्या लग रहे थे, उन पर प्रेशियस जेमस्टोन्स लग रहे थे. और जो लगून्स थे ना, लगून्स क्या होते हैं? लगून्स दे आर स्ट्रेचेस ऑफ सॉल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ लो वॉल ऑफ सैंड और रॉक. मतलब जो लगून्स थे और लेक्स थे उनमें भरा हुआ था लिक्विड सिल्वर, लिक्विड कलर का कुछ लिक्विड भरा हुआ था, सिल्वर कलर का सॉरी कुछ लिक्विड था. और दूर तक जहां उसको नजर आ रहा था, व्हाट इज दिस विस्टाज, टॉनी विस्टाज मीन्स कि येलो कलर के बहुत लार्ज एरियाज थे. तो मीन्स यू कैन से कि जितना भी एरिया था वो लार्ज एरिया वेजिटेशन से भरा हुआ था. मीन्स वहां पर येलोइश ब्राउन कलर की बहुत सारे फील्ड्स थे आप कह सकते हैं. ठीक है. और वहां पर क्या थे, जो अलग तरह के बिल्कुल ही डिफरेंट तरह के कुछ एनिमल्स थे और प्लेन्स थे, वो सब उसको नजर आ रहे थे. लग्जूरियंट वर्डिया, दिस इज वर्डिया मीन्स अगेन वही कि ग्रीन्स एवरीवेयर, देयर वाज ब्यूटिफुल व्यूज. What fun! Over there, a herd of animals so strange and rare, nothing like those seen on planet Earth, grazing on red grass in a canyon of great width. और अब वो बता रहा है आगे उसको और क्या दिख रहा है. उसको कह रहा है कि यहाँ पर मुझे बहुत फन हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे, और वहाँ पर मुझे जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो बड़े ही स्ट्रेंज एनिमल्स हैं, बहुत अलग से रेयर एनिमल्स हैं जो मैंने कभी भी प्लैनेट अर्थ पर नहीं देखी है. और वो क्या कर रहे हैं? दे आर ग्रेजिंग ऑन द रेड ग्रास. एज यू ऑल नो, मार्स का जो सरफेस है उसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं ना, तो वहाँ पर रेड कलर की घास उग रही थी और वहाँ पर वो स्ट्रेंज एनिमल्स रेड कलर की जो ग्रास थी उस पर दे वर ग्रेजिंग. और कैनियन एज यू ऑल नो, डीप वैली बिटवीन द टू माउंटेन्स मीन्स उस पूरी वैलीज रेड कलर की ग्रास से भरी हुई थी, वहाँ पर एनिमल्स ग्रेज कर रहे थे. सो then our restless eyes scanning all around, we were eager to explore every bit of ground. Accelerating our pace in rising delight, we moved forward with enthusiastic gait. Okay, so अब इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ अच्छा देखने के बाद, जो उनकी आइज थी इन बच्चों की, दे वांटेड टू स्कैन ऑल अराउंड, मतलब और ज़्यादा वो देखना चाहते थे. वो चाहते थे कि हम और देखिए यहाँ पर क्या है. तो हम लोगों ने क्या करा, हमने जो अपनी स्पीड थी चलने की वो तेज़ करी, एक्सेलरेटिंग मीन्स इंक्रीज करा. बहुत खुश थे हम और हम आगे चलते गए विद एंथुजियास्टिक गेट. गेट मीन्स टाइप ऑफ वॉक. और एंथुजियास्टिक, बड़ी एक्साइटेड वॉक से हम आगे जाने लगे. ओके, देन अप टिल हियर डिड यू अंडरस्टैंड ऑल द इमेजिनेशन ऑफ द मार्स. ये कुछ भी रियल नहीं है, इट इज जस्ट द डे ड्रीम. देन नेक्स्ट, सडन वॉज द साउंड आई हर्ड बिहाइंड. Puzzled and confused, I looked around. Saw my mother standing near, her harsh voice ringing clear. You lazy one, don't you know this is exam time? Again, you can't play a dumb mime. Blunt and curt was her angry tyrant, making my afternoon reverie suddenly fade. I saw my open book sneering at me and my uncovered syllabus avast. See, so, what happened? Suddenly, he heard a sound from behind. He was puzzled, confused, and he looked around. And what happened? He saw his mother standing behind, and she was shouting very loudly in a very angry voice. So now he was daydreaming, and suddenly his daydreaming was spoiled by or broken by the mother's voice. And what she said? You are being very lazy. This is the exam time, and you had to study. But you are daydreaming. Again you are daydreaming. Blunt and curt. Blunt and curt means in a very angry manner, in a very rude manner. She was very angry. She made a speech. Tirade means a very long angry speech she made. And because of that, all this daydreaming, it came to an end. And he realized, oh my God, I have got such a lot of work to do. और जो उसकी बुक थी सामने, उसको देखकर उसको लगा ये बुक तो मुझे मुँह चिढ़ा रही है. स्नीयरिंग मीन्स मुँह चढ़ाना. और जो मेरा इतना सारा सिलेबस अभी बचा हुआ है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा सा समुद्र हो, एक बड़ी सी वास्ट सी. सो कैन यू सी व्हाट इज द इमेजिनेशन हियर? ही इज जस्ट डे ड्रीमिंग एंड इमेजिनिंग व्हाट मे हैपन ऑन द मार्स इफ दे go there in the on the their spaceship Sputnik. Okay, so
I hope you've understood the explanation of the poem. So if you've liked it, please share it, subscribe the channel and give your wonderful comments. So now let us start with the comprehension. Now, what did the speaker see from the spaceship? Now, as I have told you, what did he see? He saw luminous spheres. Then luminous spheres, they were just suspended like glowing lanterns. And also the speaker saw meteors, comets speeding by, creating diffuse patterns. And he also saw an asteroid moving towards the spaceship. And also he saw Mother Earth, which was just looking like a luminous ball, but just like a sapphire dot. Then elaborate how Mars and the aliens differ from what the speaker had imagined or heard about them. So the speaker here is the child. So the speaker had expected Mars to be a barren belt of sterile terrain or a rugged stretch of burned craters. But what he found out? He found out that it was a cool and a serene place. It was full of scintillating scenes and ravishing sights. And also the Martians, they did not attack them, but instead they warmly welcomed. Then third question, since this is a daydream, most of the details about Mars are different from what we know about that planet. Pick out one detail that is true to what we know about Mars. Okay, so what is true here is that the gravity of the Mars, it is lesser than the Earth. So the speaker, he tended to float or lightly bounce up and down while walking on the Mars. The next question, describe how the speaker felt on Mars. The speaker felt that Mars was a beautiful place that was cool, serene, full of scintillating scenes and ravishing sights. And also the speaker liked the feeling of almost floating in the air, and he thought it was a lot of fun to be on Mars. So the speaker, he looked around and enthusiastically hurried forward, very eager to explore every part of Mars. Then next are the extract questions, and I have written all the answers here, so you can just go through them. Then one more important part of this poem is imagery. Now, what is imagery? Imagery, it is a descriptive language that creates pictures and feelings in the reader's mind through the words. For example, visually imaginary, how like suspended like glowing lanterns. Auditory, something which appeals to your ears. So an asteroid came whizzing towards us, so that whizzing sound. Then temperature, a heavenly place so cool and serene, so it gives a feeling coolness. Okay, then movement, shot into space with a violent jerk. Suddenly a jerk came and the spaceship shot up. So you just get all these feelings, you get all these ideas through the words. So this is imagery. And now different poetic devices which have been used in this poem. They are simile, just like glowing lanterns, like diffused patterns. Then metaphor, the different metaphors which have been used in the poem is a vast sea. As he said now, a vast sea. My syllabus was a vast sea. Then contrast have been made in this, like the imaginary world, it has been set against the real world. And the last poetic device is alliteration. Now alliteration means, now I'll just tell you alliterations also. Like here, you can see Sputnik, speed of sound, S, S, S. Okay, then barren belt, you can see barren belt, B and B. Okay, then scintillating scenes, you have seen there, scintillating scenes, SS. Okay, then gorgeous gardens, G and G. Lagoons and lakes of liquid, lagoons and lakes of liquid. So these are all alliterations. So these were all the poetic devices. And if you all like this poem, the explanation, please do give your beautiful comments, subscribe my channel, and like and share among your friends.